welcome back to another episode of the Late Winner Show. आज हम चैंपियंस लीग का काइंड ऑफ रिव्यू करेंगे. नॉट द एंटायर, बट हाँ, जो मेन गेम्स थे. विल टॉक अबाउट बार्सिलोना, मैड्रिड, यूनाइटेड ऑब्वियसली, एंड द न्यूकासल पीएसजी गेम which was a very very good game. तो हम थोड़ा बात करेंगे उसके बारे में. I have Uday from Loudmouth Football. हेलो Uh, एवरीवन। कैसा है भाई? अच्छा हूँ, चल रहा है, कट रहा है टाइम यूरोपा लीग में। यूरोपा लीग में मैं वही पूछने वाला था कि इंटरेस्ट तो होगा नहीं चैंपियंस लीग में, बट थैंक्स फॉर नहीं नहीं, देख रहा हूँ कमिंग सब। ऑन. चैंपियंस लीग में ज़्यादा इंटरेस्ट है, बट ऑब्वियसली लिवरपूल, आई वांट देम टू विन द यूरोपा सिंस वी आर इन अच्छा. अ लोअर लीग। चलता है, वंस इन अ मैंने व्हाइल होना मैंने भी चाहिए। मैंने एक हॉट टेक दिया था लास्ट लास्ट वीक कि आई डोंट थिंक लाइक लिवरपूल आर फेवरेट्स फॉर मी इन द यूरोपा लीग. अच्छा, तो आई आई डिडंट डोंट सी आई डोंट दैट। आई डोंट आई डोंट नो व्हाट यू फील अबाउट इट. Yeah, that can be the case also, yeah, to be honest. I don't think हाँ. we are a good solid unit abhi, but you never know because we are fairly new with the players that we have. So it's just time will tell what the situation will be like. सही बात है. चलो यार, स्टार्ट कर लेते हैं. तो आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद द न्यूकासल पीएसजी गेम, आई गेस. यार, देखो, आई जस्ट आस्क लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन कि तुझे लगा था कि न्यूकासल इस ग्रुप में कुछ करने वाली है? तुझे लगा था लाइक फ्रॉम व्हेन द ड्रॉस केम आउट? लगा था यार मुझे, ऑनेस्टली, अगर लगा तू था मेरे ना? से पूछे, हाँ, मुझे हाँ. लगा था। एंड आई फील दे हैव बीन वेरी, they've been put under a lot of pressure because of poor refereeing, poor decisions that have gone against them. Otherwise they deserve to be in the top two for sure, next या to PSG, you know. मतलब यार, उन्होंने पीएसजी की दोनों गेम में मार के रखी हुई थी यार. लाइक इवन इन दिस गेम, इफ यू गो लुक एट द स्कोर, 1-1 ही था. एंड में उनको पेनल्टी मिल गई थी, विच इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल डिसीजन मेरे हिसाब से. तो अगर, और आई मीन विल टॉक अबाउट द यूनाइटेड गेम ऑब्वियसली, बट उस गेम में मैकटोमिने के हाथ पे लगा था, तो आई फील लाइक दैट वाज स्टिल इवन अ पेनल्टी कंपेयर्ड टू Yeah. दिस वन, राइट? लाइक ये वाला तो आई थिंक किसके पे लगा था, आई डोंट रिमेंबर, बट यार मतलब बेचारे के छाती से लग के इस पे जा रहा है, उसके बाद भी देयर गिविंग दैट पेनल्टी. लाइक मतलब हाथ काट के बैठे क्या क्या करना है? मतलब लाइक दिस वाज नॉट, आई फील लाइक कि इट वाज लाइक कि यार, अगर ये पेनल्टी नहीं दी, पीएसजी माइट गो आउट ऑफ द कंपटीशन, एंड दैट माइट बी a problem for like the like for UEFA as an overall, like from money making perspective, right? So I felt like कि वो देना ही पड़ा था, क्योंकि ऐसे तो पूरे गेम में काफी डिसीजंस थे उनके जो जो उनके अगेंस्ट. आई थिंक एक और, आई थिंक कुछ एक हकीमी के अगेंस्ट भी था कुछ एक, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, राइट? बट ओवरऑल यार, मैं तो यार गिवन हम लोग ने थोड़ा बहुत छोटा सा 5 मिनट का सेगमेंट किया था अपने लास्ट पॉडकास्ट में, बट हमने बोला था यार कि हम, लाइक आई एम सुपर इम्प्रेस्ड विद व्हाट एडी वाज डूइंग, राइट? लाइक आई मीन, विदाउट इवन लाइक देयर फर्स्ट प्लेइंग 11, अभी तो इतनी इंजरीज हैं उस टीम में. लाइक दे नेम्ड देयर 2 गोलकीपर्स ऑन देयर बेंच. 5 सब्स्टिट्यूट्स थे उनके पास. दैट्स व्हाट देयर टीम वाज. तो उसके बाद भी लाइक विद द लाइक्स ऑफ द सॉरी द प्लेयर्स दैट पीएसजी हैज, उसके बाद भी उनको क्या, मतलब उन लोगों ने अच्छे खासे तरीके से रोका हुआ था. एंड इट्स नॉट लाइक कि न्यूकासल ने अपने हिसाब से चांसेस नहीं बनाए थे, लाइक दे वर प्लेइंग अवे, लाइक. बट यार, कोलुमानी, डेम्बेले, एम्बापे, लाइक ऐसा ऐसा ही लगता है कि मतलब जब एम्बापे का दिन नहीं होता ना, तो पीएसजी का भी दिन नहीं होता. इट्स जस्ट लुकिंग लाइक दैट नाउ. True. अगर I think अगर एम्बापे नहीं खेलने वाला है, तो कुछ नहीं कर सकती है टीम. Nee, I think you've correctly framed it all. I feel in that game specifically, see Mbappe and Dembele, even on their poor days, right? They हम्म. know how to create chances, bro. उनके actually उनमें flair इतना है कि अगर चलो if they're not getting past a defender or fullback, still they can shove a pass or a cross in the box. They'll find the right man, like Colomani in this case, who had good opportunities at hand, but again I think they were very poor near the final third. But again, हम्म. Dembele and Mbappe, man, like they tried a lot. And PSG का midfield को इतना भी कुछ खास नहीं है. I don't think it's a very astute midfield. They need to know how to be cohesive and very, when the team needs to be resilient. They are not still living up to that. But I still feel in this game, bro, it was very, I felt it was end to end in the first half completely. But PSG had slightly more pressure on Newcastle because I saw Newcastle in the second half were retracted, literally पीछे चले गए थे वो थोड़ा बहुत. They wanted to play on the counter. Probably, maybe thoda, they might be feeling a little leggy in situations. But Newcastle की जो performance थी, it was an outright Eddie Howe style of playing. His philosophy
reeks of attacking football, of creating pressure, of inducing mistakes, and यही कर रहे थे. And like I told you in the last podcast too, Anthony Gordon, even Alexander Isaac, I think he's a very crucial number 9 for them. I think he is that top, presser for them. He creates that Yeah, line of pressing for them, which sort of makes the other team get into a fulcrum. So Joel Linton, man, Bruno Guimaraes, ये player बहुत important है. And in fact, they were playing with a teenager. Livramento के साथ खेल रहे थे वो. Who, हाँ, mind you, has played so well in the last so many couple of games, bro. And poor guy, man, जो आखिरी में हुआ, हमने देखा जैसे उसके हाथ पे बॉल लगी. And you're right कि हाथ काट दे क्या? मतलब literally he had no reaction time. He had no reflex to portray out there, right? क्योंकि बॉल एकदम से आई है in a microsecond. So you can't really give that as a penalty. अगर VAR, if it was with the Premier League, I think this would have been discarded for sure. But Champions League, I've seen this lenient. They're very lenient with these decisions. These decisions usually go in favor of the team that have the handball in their favor. yeah. नहीं वो वही बोल रहे हैं यार वैसे आई थिंक दैट द वो लगता है कि बिकॉज ऑफ द होल मनी मेकिंग स्कीम दैट दैट एवरीवन नोस अबाउट राइट आई थिंक लोग रहेगा ही कि यार अगर इफ पीएसजी लूजेस दिस गेम तो क्या मतलब कर सकते हैं लाइक तो यू जस्ट फील लाइक रेफरीज आर आल्सो काइंड ऑफ रिगिंग द गेम कि हाँ भाई ठीक है पेनल्टी का कुछ मौका मिला है दे दो पेनल्टी पेनल्टी तो अब मिस होगी तो मिस होगी बट एटलीस्ट एक चांस तो है लाइक दे कैन टेक समथिंग आउट ऑफ द गेम बिकॉज it will be definitely like financially for UEFA it will be damaging if PSG does not even make it to the knockout stages so वो तो रहेगा ही बट यार मतलब काफी बहुत डोमिनेट किया था PSG आई थिंक आई वाज सीइंग लाइक द स्टार्ट्स आई रिमेंबर आई थिंक 31 शॉट्स कुछ थे उनके बहुत है. PSG के 31 शॉट्स थे बट 7 8 ऑन टारगेट ही थे plus I think the possession even was like 73-27 so I think yeah Newcastle एक were basically sitting back and taking the pressure and they did it and they basically did it throughout the game and they were almost like they were going to have a very famous victory at Parc de France. True. One point I want to make is that they have two really good creative midfielders, Kangli and Fabian Ruiz, who literally ran the game for them. For the midfield, I know that in terms of creating a cover, there were loopholes in that. But attacking wise, bro, I think their midfield is still elevated to a certain extent. जो हम पहले वाली midfield देखेंगे अंडर Herrera, Verratti is a good player no doubt, but then in terms of chance creation, Kangli makes those runs. ठीक है, Fabian Ruiz knows how where to pass, when to pass. So these are two very crucial players in their squad. So I think Mm-hmm. that is what really worked for them as well. And when you have Dembele and Mbappe, bro, you don't need to worry at all. Literally, अगर तू Yeah. Dembele और Mbappe को किसी Stoke City में भी खिला देगा ना, Stoke City Premier League में आ जाएगी. Literally, like honestly. हाँ मतलब ऑब्वियसली आई थिंक वो दो इतने क्वालिटी प्लेयर्स हैं कि हो ही जाएगा हाँ. यार एक तेरे तेरे माइक से आई थिंक थोड़ा सा स्टैटिक कुछ आ रहा है I don't know. Now is it okay? नहीं Hello. Wait. नहीं नहीं है Hello. Hello. हाँ काफी अभी भी स्टैटिक है क्या हो गया? जो हाँ तो यार चल ठीक है तो let's move on to the next game yeah. although actually before moving on to the next game तुझे इस ग्रुप से अब क्या लग रहा है like what do you think from this group like now obviously everything is in balance like, I think Dortmund तो कर ही गई है qualifier उनके 10 points हैं but what do you think like now Dortmund versus PSG है for last game and then Newcastle versus AC Milan I feel like Newcastle is going to win that game it's at their home I think Newcastle wins that game so they are at 8 so PSG has to defeat. I think PSG has to defeat Dortmund. Otherwise, they're out of the competition. Look, I'll tell you honestly, if even if they PSG needs to win this one, Newcastle need to win it. अगर Hmm. PSG ड्रॉ भी कर लेती है ना, न्यूकासल गोल डिफरेंस में आगे चली जाएगी मेरे हिसाब से. हाँ बट हाँ मतलब यूएफा में तो वैसे भी नहीं है ना वो गोल डिफरेंस का तो रूल ही नहीं है हेड टू हेड है रूल है नहीं. हेड टू हेड रूल है तो हेड टू हेड में नहीं वैसे भी नहीं नहीं न्यूकासल नहीं, आगे है फर्स्ट इज गोल डिफरेंस, देन गोल स्कोर्ड एट द एंड ऑफ द सीजन, एंड देन हेड नहीं टू हेड है. इट्स हेड टू हेड है फर्स्ट हेड टू हेड है बिटवीन हेड टू हेड अच्छा, होगा पहले okay, I might be wrong. हाँ But anyways, I feel Milan man have been very underwhelming this season. या Rafael I think injured हो गया था. उनका main talisman is Rafael Leo, and they're nothing in comparison to all the other two teams. Dortmund is one team which has actually proven to be one of the most strongest underdogs, and I didn't expect them to be on top of the table because in the last 2 3 seasons they've literally been in the bottom. So या that was an unexpected हाँ entry. मुझे तो यार थोड़ा-सा न्यूकासल पे गुस्सा आता क्योंकि आई थिंक द बोथ द गेम्स दैट दे प्लेड अगेंस्ट डॉर्टमुंड वर लाइक वेरी बैड. आई डोंट नो व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू अगेंस्ट डॉर्टमुंड. आई फेल्ट लाइक कि वो या तो
ओवर एक्साइट हो गए थे कि हाँ भाई हम लोग हरा ही देंगे इन लोगों को कुछ ना कुछ करके. They did not really play well. I think those 6 points were actually just given away to Dortmund. Otherwise, Dortmund, this group would have been very, very close. Because I think once Newcastle defeated PSG 4-1 in their at their home turf, I felt like Newcastle to through hai is They game se. deserve it, and it is wrong. In fact, they should have overturned the decision. वो लिबरामेंटो वाला handball है, that should have been overturned for sure, because this is not fair यार. Newcastle would have had been on literally 7 points. PSG 6 points पे होती या 5 पे होती, कितने पे होती? हाँ, 5 6 पे होती. 5 पे होती है. हाँ. 6 पे होती. So, dude, easily they would have won it, bro. Like on Newcastle, that's what I'm trying to say. The way they play, bro, it's even better than PSG. उनका ये नहीं है, they don't have better players than PSG, but they are all in sync in terms of chemistry है टीम में. जब वो खेलते हैं एक साथ, उनको पता है कैसे करना है. हर एक बंदे को पता है. जैसे मैन सिटी में हर एक बंदे को अपना रोल पता है. इस टीम में भी एडी हाउ हैज क्लियरली डिफाइंड अ सेट ऑफ रूल्स that a player on the pitch has to follow, and they know where to be in the right moments. That is how you Yep. see their very top counter presses also in the league, bro. Very top counter presses. Yeah. चलो अब उसके बाद नेक्स्ट प्रीमियर लीग टीम पे आ जाते हैं. यूनाइटेड की बात कर ही लेते हैं. कर लो. आई थिंक बहुत लोग उत्सुकता से देख रहे हैं कि भाई कब होगा यूनाइटेड की बात. तो आई थिंक यूनाइटेड डेफिनेटली प्लेड गुड. आई वुडंट से दैट यूनाइटेड डिड नॉट प्ले गुड बिकॉज आई मीन इट्स अ वेरी अनरियल स्टार्ट कि यूनाइटेड ने सबसे ज्यादा गोल्स मारे ग्रुप में और सबसे ज्यादा गोल्स कंसीड भी किए ग्रुप में. तो क्रेजी है ब्रो. लाइक यार 4 गोल बायर्न के अगेंस्ट, फिर 3 गोल गैलाटासराय के अगेंस्ट, फिर 1 गोल, फिर आई थिंक दे केप्ट अ क्लीन शीट ऑब्वियसली लाइक एट द एंड मोमेंट व्हेन ही सेव्ड द पेनल्टी. फिर 4 गोल खाए कोपेनहेगन के अगेंस्ट, अब 3 गोल फिर खा लिए. मतलब इफ किसी ने वो 2 गेम देखे हैं ना किसके गैलाटासराय के अगेंस्ट, आई फील लाइक people will be surprised कि how come we did not win the game after scoring 3 goals or 3 goals in This that is and, not good. and then 2 goals in the previous at home for अबे. और पता है होम वाले गेम में Galatasaray still looked like a little bit tricky for United because at that time तो प्लेयर्स भी नहीं थे वो वाले हमारे पास. और ये वो लाइक उसमें तो यार प्लेयर्स भी थोड़े थोड़े इंजर हो, थोड़े वापस आ गए एंड लाइक यू फील लाइक कि थोड़ा सही मोमेंटम में जा रही है टीम. इवन दो द परफॉर्मेंसेस हैव बीन दैट ग्रेट राइट. बट फिर भी लग रहा है कि यार वो दे आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. इसमें इतना स्पेस ये सब कुछ मिला है. इट्स जस्ट वही दे तो, हैव बेसिकली bottled it. bro. and and to be It is. honest This is like not मुझे a good ओनाना, performance. I don't think so. it is not a good performance. Like you're right. अगर 3-3 स्कोर लाइन देखा जाए, it can be deceptive, but I'll tell you one thing. You've correctly mentioned one thing. इतनी स्पेस तो मैंने यूनाइटेड वर्सेस वो कौन सी टर्किश टीम थी जिनके साथ खेले थे वो, जिसमें वो था डेम्बाबा. He scored a goal Fenerbahce. from that. Oh, Besiktas. बेसिकटस, हाँ. Yeah. बेसिकतास साथ खेले थे वो, and literally I think I remember he ran past Maguire. He ran 60-70 yards to score that goal against United. It wasn't even that. It was like even worse than that game. I'll tell you why. First, a lot of loopholes, a lot of space in behind the midfield. Bro, क्या कर रहे हैं? हो क्या रहा है भाई? If I had a pair of binoculars on the pitch, bro, I would try to fetch out where's the next man next to me, bro. इतनी space थी, bro. There was a massive hole in that midfield, and even Galatasaray. I'm not just saying कि United. It was like a ping pong NBA game लग रहा था भाई. Like a fucking ping pong competition. Back to back, they're taking shots at each other. Like the game, you might arguably say it had high quality. It did not. ठीक है. In terms of chance creation, many chances were created and many chances were dropped as well. Bruno का, I remember in the second half, that banger of a shot. ठीक है, it hit the post. McTominay, I feel out of all these players, McTominay had a really good game. Tried his level best. But still I feel somewhere United, Luke Shaw, एक ये है कि Luke Shaw जब खेलता है United के लिए, bro, he is another pedigree only. You get to know कि United was missing this fullback because he Yes. knows positioning is key for him also, कि वो position में आ जाएगा. And the way he's actually worked on his fitness over the last couple of seasons, he has become faster. So that's a good sign for United कि he should be fit. They need to maintain this player for sure. So Yeah. this is a positive sign for you for sure. And Anthony Marshall का भी ये है कि again in this game also I thought कि he was trying no doubt, and he always tries, but then he was missing from this game too, I felt. हाँ अरे यार बट पता है मतलब मुझे तो नहीं लगा ऐसा कि मैकटोमिने का गेम बहुत अच्छा था. मतलब ठीक है चलो ही प्लेड हिज पार्ट आई वुड से. बट Yeah. टू मी
इसमें मैं थोड़ा ब्लेम करूंगा टेन हाग को, राइट? मैं एंड आई एम नॉट अ लाइक अगेंस्ट टेन हाग, आई एम डेफिनेटली प्रो टेन हाग, बट यार पता है क्या, कई बार क्या होता है, लाइक व्हेन you're 3-1 अप, वो क्या होता है ना, थोड़ा गेम मैनेजमेंट करो यार, थोड़ा सा तो गेम मैनेजमेंट करो। लाइक ठीक है यार, आई अंडरस्टैंड कि कोबी मैनो को नहीं खिलाना था उसको बिकॉज ऑफ लाइक अभी यंग है, पहली बार पहला गेम उसने स्टार्ट किया था एवर्टन के अगेंस्ट एंड दे हैड अ वेरी गुड गेम, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गेम फॉर यूनाइटेड एंड ही डजंट वांट टू पुट हिम इन अंडर प्रेशर। बट तू एक बात बता मुझे, ओनाना को भी ब्लेम मिलेगा ऑब्वियसली, एंड यू हैव टू ब्लेम हिम बिकॉज ऑल 3 goals, इट्स बिकॉज ऑफ हिज फकिंग स्टूपिडिटी। यस, राइट। उस बाकी टीम में क्या गलती है किसी की? और डिफेंस में तो किसी ने कुछ ऐसा नहीं किया, लाइक भाई, राइट, लाइक एवरीवन वाज डूइंग देयर जॉब्स। इट इज लिटरली एवरी गोल इज बिकॉज ऑफ ओनाना, राइट? मतलब यार वो तू अपने, आई डोंट नो व्हाई ही इज Poor keeping, ट्राइंग टू bro. बिकम, बट आई डोंट नो व्हाई ही इज ट्राइंग टू बिकम अ हीरो। क्यों इतना अच्छा कैंपेन था उसके इंटर मिलान के अगेंस्ट लास्ट टाइम, लास्ट सीजन? ही हैज दीस ट्रेट्स। एक वो भी तूने पता है कि, आई थिंक, आई डोंट नो if तूने गेम देखा था कि नहीं, बट उसने एक मिडफील्ड में जाके एक बढ़िया टर्न मारा था। वही ट्रेट्स हैं उसमें। आई एम नॉट सेइंग ही इज अ बैड कीपर, बट प्रॉब्लम इस समय हमको, हम मैन सिटी के कॉन्फिडेंस पे नहीं खेल रहे हैं ना, कि यार कुछ भी करके आगे तो हम, मतलब गेम तो हम जीत ही जाएंगे अगर तू थोड़ी बकचोदी करेगा भी तो, राइट? वो है ही हमारे पास, वो लेवरेज ही नहीं है उस चीज का। क्योंकि एवरी टाइम यू सी कि जब जब हम गोल मारते हैं विद इन 10 मिनट्स वी कंसीडर। वो क्या होता है ना कि भाई 2 goals की लीड है या 2 गोल 3 गोल मार लिए हमने, यू लाइक ओके, 15-20 मिनट, 25 मिनट हमने थोड़ा प्रेशर हैंडल कर लिया है, एंड वी नॉट कंसीडर्ड द गोल, थोड़ा अब रेस्ट कर सकते हैं, राइट? बिकॉज इफ द अदर टीम इज अटैकिंग ऑल द टाइम, दे विल आल्सो गेट टायर्ड, लाइक इट्स नॉट लाइक गो ऑन फॉर लाइक 90 मिनट्स गंग हो कि बस हाँ, शॉट्स पे शॉट्स मारते हैं, ये तो नहीं होने वाला। बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो इतना क्यों अपने आप को, मतलब ऐसा ऐसा क्या दिखाना चाह रहा है कि मैं वापस आ गया हूँ या मैं दुनिया का बेस्ट गोलकीपर हूँ, क्या है मतलब यार? It इट is वाज a howler. These या misses, लाइक जीएच you वाला, should not be जीएच वाला सेकंड fumbling in में। such situations at all, bro. Hakeem Ziyech, especially, he's a very good left foot taker. उसने 2 गोल मारे, चलो ठीक है, नहीं जाने चाहिए थे, चले गए. This one thing which I don't understand is your mentality, bro. You've got a mentality issue in terms of, if this has happened not once, not twice, on 3 different occasions. ठीक है, in the Champions League, where you actually scored more goals and then you went down. भाई ही हैज कॉस्ट This अस द is कैंपेन, ही हैज he कॉस्ट, has. लाइक I उसने agree. एवरी गेम में उसने गलतियां करी हैं यार But tell चैंपियंस me, लीग में। why aren't you putting these teams to bed? एक तो ये भी है ना. Why are you laying in so much space for Onana to get into action? Plus, you are conceding so many fouls. इतने foul किए हैं तुमने. Galatasaray in the first half also could have literally been 2 goals ahead of you. उनके chances अच्छे थे first half में. ठीक है, but then still I felt कि चलो United had a upper hand in a way that they were creating more in the second half. They had that game plan in action. बन रहा था गेम, लग रहा था कि चलो एंड टू एंड चल रहा है. बट स्टिल थोड़ा कवर तो दो यार. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजिंग योरसेल्व्स व्हेन यू आर getting hit on a transition, you're not able to do that. How will you set the benchmark when you're not consistent in the first place, bro? You need to center your chi and you need to tell yourselves as a unit that we need to recognize कि we should know what our the player next to us is going to do. What are the next 2 steps that the player next to us is going to take? We need to actually decipher that. I think United ka game is more based on, again, individual prowess also to a certain extent. When you attack also, no, individualism दिखती है players में. उस moment में भी ना, the other unit doesn't look like that they're in tandem. हाँ ठीक है, बट आई मीन आई अंडरस्टैंड दैट ब्रो, लाइक कि पता है क्या है, मुझे मुझे तू जो मैकटोमिनी की बात कर रहा था, ठीक है, मे बी ही हैड अ गुड गेम फ्रॉम योर आइज, बट आई फील लाइक कि यार जब जब व्हेन यू आर 3-1 अहेड, व्हेन यू आर 3-1 अहेड भी छोड़ो, मेरे हिसाब से ओनाना का बेस्ट रेट क्या है? सबको यही पता है, राइट? कि ओनाना का बेस्ट रेट इज लाइक ही इज अ बॉल प्लेइंग कीपर, वो हम बार बार बात करते रहते हैं ना, बट आई फील लाइक कि वो बॉल प्लेइंग कीपर की तो बत्ती बजाओ और डालो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। Fuck आई ball वॉन्ट playing. पहले ball आई stopping तो कर लो. हाँ, आई वॉन्ट हिम टू स्टॉप द बॉल्स। Yeah. वो यार स्टॉपिंग ही नहीं कर पा रहा कोई गेम में, एंड आई फील लाइक वो अभी प्रीमियर लीग में धीरे धीरे थोड़ा सा फॉर्म में आ रहा था, वेर ही वाज लाइक डूइंग गुड। अभी फॉर सम रीजन लाइक he's at the he's at the top of the Premier League in terms of clean sheets, so which is a अरे very he's bullshit, bro. I unrealistic, think हाँ, he's been unrealistic crushed so start far. है वो Literally थोड़ा, one of the worst हाँ। keepers in the Premier League so far. I'm sorry to say that, but that is how it is. भाई एक और चीज है before we get into the next game, bro.
mentality issue है mostly. Consistency, you need to be consistent, and like I mentioned, they need to be tracing the steps of what their players are going to be doing. This is what needs to happen. This is what हम्म, top teams do. Liverpool, even Chelsea, bro. They know उनकी chemistry तो है, chances अच्छे बनाते हैं वो और cover भी देते हैं. उनका defense अच्छा है. They have been unlucky in situations where they've been conceding so many goals, but at the नहीं same वही time, है यार, United need to focus on this. तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ ना कि भाई इसमें टेना की थोड़ी तो गलती है कि यार जब 3-1 अप हो गए थे तो यू शुड हैव डन सम गेम मैनेजमेंट, इन गेम मैनेजमेंट थोड़ा उसको सही होना चाहिए था। देयर बिल्कुल। इज नो रीजन, देयर इज नो रीजन एट एक ऑल एक बात व्हेन बता, यू अमराबाद को क्यों व्हेन यू निकाला? अमराबाद को निकाला क्यों? हाँ। और अमराबाद को। अमराबाद, अरे तो अमराबाद को भाई मैं ये तो कह रहा हूँ कि जब जो मुझे ये लग रहा है कि जो उसका ही डिड नॉट चेंज द इन गेम ये प्लान, उसका कुछ चेंज ही नहीं किया उसने। उसने सिर्फ अमराबाद को निकाल के कोबी मेनू ले आया एंड नाउ कोबी भाई मेनू कोबी माइनो ने इज कुछ प्लेइंग। किया ही नहीं ना, कुछ नहीं किया। नहीं किया तो सही उसने, बट यार ही क्या वाज किया? जब पिट रहे थे तुम, कोबी माइनो बीच में खड़ा हुआ था। लिटरली हाँ every बट time I saw him getting crossed over, bro, you were getting bypassed easily, and Kobe Manu was at the center of the situation that time also. You know, नहीं I don't कि think, मैं maybe I might have seen it wrongly, but हम्म, what I saw was कि Kobe Manu, when you were off the ball, literally defend करते वक्त कोबी मैनू ने कुछ किया नहीं भाई। ऑफ द बॉल तो दोनों टीम ही घटिया थी। बट ऑफ द बॉल तो क्यों? दोनों ही टीम चल ही घटिया गैरेट थी, बट आसरे तो वही है भी बट टर्किश मैं टीम वही है। तो कहना चाह रहा हूँ, बट मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि उसमें भाई यूनाइटेड के पास तो क्वालिटी है, गैलेटासराय से तो कंपेयर नहीं कर सकता। भाई तूने वाला गोल देखा था ना जो मैकटोमिने वाला गोल मारा है, उसमें जाहा ने जाने दिया वैन पिसा को कि भाई तू रन या। मार, मैं तो नहीं आ रहा हूँ डिफेंस कर। उसने जाने दिया उसको। लाइक इफ यू आर सीइंग दीज थिंग टाइप ऑफ थिंग्स, भाई टेन हाग तो मैनेजर है, उसको तो दिख रहा है चीजें वहां पर, तो व्हाई डोंट ही डू ट्रू। सर्टेन थिंग्स टू मेक दीज चेंजेस। मैं बस उस चीज के लिए क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ जब 58 मिनट्स पे 58 मिनट्स 54 55 पे जब हमने गोल मारा था राइट, 3-1 जब या। किया था, द या। गेम शुड हैव बीन जस्ट डन। उसके बाद बोला बस बॉल कंट्रोल करो, वेस्ट करो टाइम, जो करना है करो, खत्म करो, पीछे पीछे करके पास करके निकालो गेम यहाँ से। ट्रू। ट्रू। We अटैक। didn't need to go out and attack more and score 7-8 goals. हमको चाहिए ही नहीं था। अल्टीमेटली हमें वो स्पेस मिल ही जाती बिकॉज दे वर गोइंग टू प्रेस टू मेक ट्रू। श्योर कि ठीक है वो थोड़ा कंसीड करते। दे जस्ट हैड टू थ्रो द बॉल फ्रॉम द टॉप, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना था। एंड समबडी बिल्कुल। वुड हैव मेड द रन। गार्नाचो था, एंटनी था, ब्रूनो था, कोई ना कोई तो रन मार ही लेता यार। और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं एक चांस तो मिल ही जाता। हाँ 70 यार, मिनट्स के चांसेस बाद भी थे ना चांसेस भाई। मिले हैं, 70 मिनट्स के बाद भी चांस मिले, 70 मिनट्स में सिर्फ 3-0 हो डिफेंसिवली गया। तुमने हगाया, बाकी तो आई थिंक ऑफेंसिवली यू गाइस वर ऑन पॉइंट, टू हाँ, बी ऑनेस्ट। ऑफेंसिव वाज गुड, बट वही ना डिफेंसिवली बिकॉज़ समझ ही नहीं आया कि भाई क्यों, व्हाई आर वी प्लेइंग सच अ, लाइक जो तूने एकदम सही बोल दिया एनालॉजी, एनबीए टाइप गेम लग रहा था ये। पूरा पूरा बस एंड टू एंड फुटबॉल चल रहा है, तो और जिसकी जरूरत ही नहीं थी। आफ्टर 3-1 यू शुड हैव शट अप द स्टोर, शट अप द शॉप, एंड उसके बाद बी लाइक अब यहाँ से बस हम गेम कंट्रोल करेंगे, हमें नहीं फर्क पड़ता हम गोल मारे या ना मारे, दैट्स ऑल वी नीड टू ट्रू। डू। बट किया ही नहीं। दैट इज वेयर दैट इज वेयर वी लॉस्ट इट। हाँ ठीक है, वो अलग बात है कि हाँ ओनाना ने हक दिया पूरा का पूरा, विच वाज नॉट सपोज टू हैपन। बट ठीक है, अब राइट। तीनों के तीनों गोल उसने पड़वाए हैं टेक्निकली, लास्ट थर्ड गोल भी उसने ही पड़वाया, क्यों इतना आगे खड़ा हुआ था? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। भाई ये बट mentality issue है ये. This is getting, these are the vibes that the team is giving to other players also. Otherwise, people who came to United before playing for United, they were playing in other clubs जहाँ पे they were performing really well. So I feel this is a mentality issue which needs to be eradicated, and there are certain ways of doing it which we can talk about some other time. But no, for या sure they need to focus on the mentality for sure. Like, this is something, mentality is a very openly used word, but at the same time it should be emphasized on, क्योंकि या हम लोग, वी आर वेरी वेल astute professions, ठीक है, प्रोफेशनल्स, वे वी हैव स्टडीड मैनेजमेंट स्टडीज एंड ये वो, और मुझे साइकोलॉजी और ये स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी एंड अदर थिंग्स व्हिच portray your mentality. I think these are very emphasized on. You know, या why do we perform well in our jobs? ये mentality issue है, ये mentality का scene है. अगर तुम, you feel lazy on your job, that's a mentality issue. You need to, like today in the morning, I was telling myself, bro, कि नहीं, you're at work, fucking focus on work. Stop thinking about football. You know. So similarly, there are so many things which define the way you are. So I think या it's holistically dependent on your mental energy and the vibes that you're giving to other people also. या
चलो यार ठीक है, एनीवेज बहुत होगी यूनाइटेड की बात, और करने का वो भी नहीं नहीं है नहीं, मेरे और पास बहुत और तो पेशेंस। नहीं करेंगे ना इसका। ना नापोली आ, का करते हैं, नापोली मैड्रिड। क्या गेम था ब्रो, हाँ एंड टू एंड, फक ब्रो, मजा आया। द ओनली थिंग व्हिच आई फेल्ट वाज नापोली ब्रो, यू नो, उनका सेकंड हाफ ना अच्छा नहीं रहा यार। दे हैड चांसेस इन हैंड, दे वर क्रिएटिंग अ लॉट। कविचा कवार्शेला वाज एक्चुअली गेटिंग, लिटरली गेटिंग इनसाइड द बॉक्स। कारवाहल को भी बाईपास कर गया था वो, लेकिन उसका फाइनल टच ही अच्छा था यार। दे वर सो क्लोज टू स्कोरिंग 3-4 टाइम्स इन द सेकंड हाफ आल्सो। यस 60 65th minute तक they were inside the game, but I don't know what happened bro, they couldn't lay the ball, they couldn't give the final delivery to Osimhen। otherwise Osimhen ने मारना था। Osimhen ने एक ऑफसाइड स्कोर गोल भी स्कोर किया था, वो काफी अच्छा यस। वेल क्रिएटेड गोल था। बट Real Madrid is Real Madrid bro, this Real Madrid team is so meticulous, they are so well in tandem, intelligent on the pitch। टोनी क्रूस तो चलो छोड़ो, अच्छा है ही है वो, बट जूड बिलिंगम ब्रो, सिंगल हैंडेडली रनिंग, मेकिंग दोस रन्स, भाई तूने लास्ट गोल प्लेइंग। देखा है उसका? लास्ट गोल में भाई पूरा क्या उसने असिस्ट। मिडफील्ड से कंट्रोल किया उसने। एक हाँ पूरा उसने टर्न लिया, ही पास द बॉल, ही रैन, ही गॉट द बॉल एंड ही आउटसाइड फुट से बॉल पास करके उसने भाई वो मारा है आउट होसेलू ने। आउटफुट से दिया उसने बिल्कुल, मतलब हाँ फ्रॉम हिज फ्रॉम द पिंकी फिंगर ब्रो, लाइक लिटरली तो दैट वाज लाइक क्रेजी डूड। भाई even the goal that he scored was an amazing finish. दैट गोल वाज In good अमेजिंग, yeah, ball you're right, from for sure। Alaba and yeah, it's crazy. Like वो भाई he's at like literally the like nobody, ठीक है, like nobody expected कि ठीक है, everyone knows like he's the next big England prospect and or maybe even the best player like after Messi, Ronaldo जो भी है, हाँ but I think उसने किसी ने आई थिंक किसी ने ये चीज एक्सपेक्ट तो नहीं की थी कि इतने गोल मारेगा जाके, like without Benzema and Madrid signing Joselu as a loanee option, like people really thought कि they are going to struggle, but they're top of the league and Bellingham has like taken on that responsibility ही कि भाई हैज। कोई बात नहीं, मैं हूं और मैं जितवा दूंगा, and that's what I think this is what that club is about। वो एक वो जो होता है ना, बस तुम्हें वो एक when you see like when you enter Bernabeu, like मैं तो कभी गया भी नहीं हूँ, but I just like explaining this from like what I've seen, right? बर्नर जाओ, वो जो तुमको आता होगा यार, फील आता होगा यार कि ऐसे 11 कितने चैंपियंस लीग जीते हुए हैं, 13-14 ऑब्वियसली चैंपियंस लीग ब्रो। जीत गए हैं। You have get that feeling, right? जब anthem बजता होगा, that's the reason. Like even after even after Ronaldo going, like they've won 2 leagues, 2 Champions League after that also. And वो जो एक तो जीते ब्रो हैं, वो कौन सा वो जो क्रेजी वो जो सिटी के अगेंस्ट जीते थे, like that हाँ, is। वो भी और बहुत क्लोज था। जो तू यूनाइटेड की बात करता है ना, मेंटालिटी वाली, ये मेंटालिटी ये है मेंटालिटी क्लब के मॉन्स्टर अंदर है बैठी बिल्कुल। हुई है। ट्रू इट्स नॉट ट्रू। गॉन इन एनी वे, नहीं नहीं गया जाएगी, है। इतने ट्रॉफीज तुमने जीते हैं, कहाँ जाएगी? यू फील रॉयल, यू फील एंटाइटल्ड। एंड इन फैक्ट आई टेल यू वन थिंग ब्रो, इन दिस गेम पर्टिकुलरली, यू नो, आई वाज थिंकिंग, मुझे ऐसे लग रहा था 68 मिनट तक जब नापोली सेकंड हाफ में डोमिनेट कर रही थी ना, मुझे लग रहा था नापोली ले जाएगी गेम भाई। हम्म, हम्म, एक ना प्लेयर है फ्रैंक एंगुएसा, उनका सेंटर डिफेंसिव मिड है वो, सेंटर हाँ मिडफील्डर इस है, कहते हैं, हाँ उसने जो हाँ। सेकंड गोल मारा था भाई, वो बहुत अच्छा गोल था। थोड़ा Alaba सा could लकी have था वो। saved it. He couldn't save it, but it was a very fantastic goal scored. From there on, I was like, bro, Osimhen is in। उसके डिएगो सिमियोनी के बेटे को निकाल दिया उन्होंने। लिटरली उस मोमेंट पे आई वाज लाइक, ब्रो, नापोली ले जाएगी, बट नहीं भाई, हम्म, रियल मैड्रिड, लाइक यू मेंशन्ड, मेंटालिटी किंग्स, दे गॉट इनटू इट। लिटरली उनको उनकी हवा निकाल दी थी डूड। एंड अ कपल ऑफ अदर प्लेयर्स आई वुड लाइक टू गिव शाउट आउट टू इज ब्राहिम डियाज ब्रो, इतना फ्लूइडिक लगता है वो, उसका फुटवर्क इतना अच्छा है। जब मिलान के लिए खेलता था तभी बहुत अच्छा खेलता था। ही इज नॉट अ वेरी गुड फिनिशर ऑफ द ऑन द बॉल, बट स्टिल दैट गाय हैज लॉट ऑफ टैलेंट एंड ही इज अंडररेटेड, अंडरवैल्यूड हम्म। फॉर श्योर। ठीक है, बाकी रॉड्रिगो ठीक खेला, वेलवर्दे बहुत भाई अच्छा खेला, आई फेल्ट। रॉड्रिगो के बारे में थोड़ा सा तो बात करना पड़ेगा, लाइक हिज करो करो। परफॉर्मेंसेस were atrocious in the initial part of the season, but he's just picked himself up road। ट्रू, Vinicius out हुआ है and he's just be like कि भाई मैं हैंडल कर लूंगा गोल्स आगे। आई विल टेक द भाई बेटन एंड कितने गो अहेड। भाई आखिरी पिछले 3-4 गेम में आई थिंक ही इज ऑलरेडी गॉट लाइक व्हाट 4-5 गोल्स और 4-5 असिस्ट दे चुका है वो ऑलरेडी पिछले 3-4 गेम में। और दिस इज हिज फॉर्म राइट नाउ। क्रेजी क्रेजी खेल रहा है भाई, वो क्रेजी खेल रहा है। अगर तू फीफा लेवल फीफा रेटिंग 99 करेगा ना अभी, तो स्ट्राइकर पे, अभी फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई एम रेडी टू डू दिस। 99 पे मैं रखूंगा हालैंड को, मिडफील्ड में 99 पे रखूंगा मैं जूड बेलिंगम को। हम्म, लिटरली लाइक दीज टू प्लेयर्स आर लाइक फिनोमिनली डूइंग सो above and beyond what we expected bro, मतलब this is like crazy what they're doing bro। ये अनएक्सपेक्टेड था। और जूड बेलिंगम क्या
player है यार. Like literally he can be played as a striker also, bro. हाँ, खेल ही Makeshift रहा है वो, striker. तो हाँ, खेल ही रहा है वो, एज अ हाँ. स्ट्राइकर ही खेल रहा है वो आगे जाके रन्स मार रहा है, पूरा मस्त खेल रहा है यार वो. Fuck, He's bro. doing Yeah, instinct है, everything. bro. Instinctive. He's doing everything. He's doing everything in that team right He's now. a fucking dog, bro. Like literally, he'll Yeah, just pound onto you. He's yeah, like that. yeah. Literally, this is one of the best games I've seen in the group stages. मजा आया मुझे बहुत देख के, ये वाला गेम स्पेशली अच्छा लगा मुझे. हम्म. बट यार नापोली भी थोड़ा सा मतलब ऑब्वियसली आई थिंक उनका कोच सैक कर दिया था अभी 6 महीने, मतलब विद इन प्रोबब्ली 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, 6 मंथ्स जो भी था. आई Scaloni. थिंक बट आई थिंक एवरीवन एक्सपेक्टेड दैट. आई थिंक मैं तो टू बी ऑनेस्ट मैं तो एक्सपेक्ट कर ही रहा था कि नापोली विल नॉट बी द नापोली फ्रॉम लास्ट सीजन, बिकॉज Right. स्पेलेटी चला गया. स्पेलेटी इज नाउ कोचिंग Spalletti. इटालियन नेशनल टीम. हाँ, तो आई फेल्ट लाइक हाँ वो नहीं करने वाली जो नापोली की टीम लास्ट ईयर थी. अबे तू 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 लास्ट सीजन के देख ले, मतलब व्हेन दे वन द लीग बाय 16 पॉइंट्स यार. दे वन द लीग बाय True. 16 पॉइंट्स. तो एंड उसमें भी at the last in the last games, like at the last end of April and May, when the season is about to end, they lost so many games because उसका पता चल चुका था कि अब जीत चुके हैं. बट दे वर अमेजिंग लाइक थ्रू आउट द सीजन. बट वो पता ही था यार, एक बार वो कोच चला जाता है ना, योर थिंग काइंड ऑफ ड्रॉप्स अ लिटिल बिट, बिकॉज वो एक मेंटालिटी और वो जो एक प्लेइंग स्टाइल जो तुम्हारे को वो कोच खिला रहा होता है, it'll take time to adapt to it. So I'm kind of a little bit sad कि हाँ उस वो बेचारे को sack कर दिया उन लोगों ने within like for 4-5 months. But I think वही है ना, because when you're defending the title and you're not having that kind of season where where you had like 45 points at this point of time, तो वो लगेगा ही कि हाँ भाई अब कि sack करो, maybe Goodbye, it's not Tata. working out. It's not working out. Yeah, exactly. Hmm. Right. चलो ठीक है. लास्ट गेम के बारे में बात कर लेते हैं, बार्सिलोना, and then we'll हाँ, wrap it up. अच्छा गेम था ये भी बहुत. बार्सिलोना पोर्टो भी अच्छा ही गेम था, बट आई थिंक बार्सिलोना अच्छा a ही. little bit under pressure. I think they had to do Barcelona better. were literally, I'll tell you, quality. It came out in the end of the day. You have to see quality is better in Barcelona for sure. I'll tell you, I think one of the best games that Joao Cancelo has played for Barcelona as a fullback. I think his link right. So I felt, bro, this game was out of the world, bro. Like literally, I think काफी tight game थी ये. The thing is, like I mentioned, quality that you saw from Barcelona. This is what we expect from Barcelona, and I think this team can literally lift trophies. Agar if they are consistent, if they don't fall down to injuries. Okay. Pedri, Cancelo, Joao, Felix, Lewandowski, Rafinha. I think these players literally stood out. अभी भी आ रहा है क्या static? नहीं स्टैटिक नहीं आ रहा. मैं तेरे कमेंट्स पे हंस रहा हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल ऑपोजिट सोचता हूँ इस बारे क्या में, बात कर इसलिए. रहा है? I thought the quality was good, bro. Like for sure. I think if नहीं you मैं look at इस this मैच unit की of players, मैं मैं इस मैच की बात नहीं कर रहा हूँ. you're मैच में talking अच्छा about खेले Acha. हैं. Okay, हाँ, overall. I'm just talking But overall. Like I'm not very impressed with Barcelona. I'm you're just not? like No, see, I I am don't not. watch Barcelona games, but I'm just talking on the basis of this performance. Hmm. I see a team which can actually be one of the best teams what they were, right? They Hmm. can actually be competing with the Barcelona from 2016-17 when they were still Hmm. okay. The Okay. ship fell as soon as Messi was out. ठीक है? Since Yep. then, they've been facing a lot of scrutiny, but yeah, yeah, Barcelona, they can still do really well. I think Rafinha stood out for me, to be honest. The way Cancelo literally was creating the plays from that And fullback position, running ahead, making 10-yard runs, and then passing the ball crossfield to Rafinha. इतनी बार हुआ ये. And Rafinha ने अच्छे shots लिए हैं, which were yeah. deflected. They were saved, right? But at the same time, I felt they were in tandem, they were in sync, bro. Like literally one-on-one करके फटाफट बॉल आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं. औरुआ का क्या अच्छा रोल था. औरोजो क्या नाम है इसका? औरोजो या what is his name? Araujo. Araua, right? I don't watch again La Liga, but so I don't know the names. But at the हाँ. same time, I think he was that man who was blocking the runs for the left wing, right? जो Porto का left wing था. So Hmm. I think that was very crucial in terms of creating turnovers in the middle of the pitch. Frankie De Jong ने बहुत किया. Pedri काफी help कर रहा था in dispersing the plays out. So I think Barcelona का attack बहुत अच्छा था, and even defense. I don't think defense में कोई problem थी on as such कोई problem नहीं थी. But chance creation, they should have put them to bed a long time back. First half में they could have ended the game, but they couldn't. एग्जैक्टली. सो यहीं पर वो इशू यहीं पर है. सो आई हैव बीन फॉलोइंग बार्सिलोना, लाइक ऐसा नहीं कि मैं बैठ के हर गेम देख रहा हूँ, बट हाँ आई हैव बीन फॉलोइंग बार्सिलोना थ्रू आउट दिस कैंपेन. बट मेरे को प्रॉब्लम क्या लग रहा है ना, प्रॉब्लम यही है कि एक तो कंसीड पहले कर देते हैं, एंड दे विल निक आउट गेम्स एट लिटरली द डेथ. तो वो Right. पूरा का पूरा गेम चलता है 75, 80, 85 मिनट तक चलेगा ये, और उसके बाद जाके कुछ एक हो लगा. इवन अबे कितने तू तू जाके हर गेम का स्कोर देख,
every time. Barely there's any game where they have not conceded, or if they've not conceded, they have won the game in the end, in the dying moments. सेल्टा वीगो वाला मेरे को कोई गेम याद है, उसमें भी भाई 81st तक 2-0 डाउन थे वो, बाय 90 they were winning 3-2, and then everybody's like, oh, this is what the Barcelona's look like, भाई. I'm telling, and from there I have been saying this in my mind. We've not talked about this obviously on a podcast, but yes, मैं तब से ये कह रहा हूँ भाई, Barcelona is not impressive. It is not. भाई वो क्या है ना, इन लोगों ने बस प्लेयर्स भर रखे हैं. This is what I feel. प्लेयर्स भर रखे हैं. It's not like वो एक होता है ना, कोहिजन होता है टीम में, वो नहीं है. वो नहीं है इस टीम में. Cancelo, yesterday Cancelo was, to me, was the best player. He was. Yeah, he was the best क्या player. गोल मारा है Felix, उसने? huh? Felix finally showed something, because otherwise He showed, but he he's missed a been, very easy sitter also. हाँ, First half में. right, वही बोल रहा हूँ, but he has been like this only. Yeah, yeah. वो कुछ नहीं कर पा रहा है यार. Lewandowski is not Lewandowski. To be honest, like the first season that he had is probably that the only season he's had, at least as a good season, I Yeah, would say. he's not getting उस that space. हाँ, मैं देख रहा था. He उसमें भी was नहीं है struggling a उसमें. lot. हाँ, बिकॉज यार ठीक है, उसमें इंजरीज हैं अभी उनको. आई थिंक गावी वावी इंजर हो गया, पेड्री भी इंजर हो गया, आई थिंक सो. यही हो यही गया बात है. बैटरी? Oh fuck, हाँ, that is sad. पेड्री भी गया, आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है. That is not आई good. डोंट रिमेम्बर. हाँ, नहीं पेड्री तो है, गावी गया है फिर, सॉरी. गावी इज इंजर्ड, यस. तो गावी तो गया, आई थिंक. गावी को कुछ तो हुआ है, लंबा इंजरी गया है उसको. तो यार आई एम जस्ट नॉट इम्प्रेस्ड विद बार्सिलोना दैट मच. यार मेरे को लग रहा है कि ये ना, ये लोग इस बार नहीं करने वाले हैं कुछ. एंड अगेन, राइट, लास्ट सीजन पीपल विल से कि बार्सिलोना वर प्लेइंग वेल. यस दे वर, बट आल्सो देयर वाज नो प्रेशर, राइट. इस बार मैड्रिड से प्रेशर है दैट दे हैव टू विन एवरी गेम, बिकॉज़ मैड्रिड इज विनिंग बेसिकली एवरी गेम. I think Madrid will lift the La Liga for sure. हाँ, अभी के हिसाब से तो ये लग रहा है, बट अगेन, राइट, उसमें भी ये हो सकता है बेलिंगम को कोई ऐसा लंबा इंजरी हो गया तो ऐसे वो मत चली बोल यार. जाएगी. मैं बता रहा हूँ, मतलब मैं बोल रहा हूँ बस ऐसे. बट ऐसे हाँ, तो मैड्रिड के पास भी खुद के पास इतनी इंजरीज हैं यार. मतलब सही बात है, कोर्तुआ सही चला बात गया है. उनका. कोर्तुआ हैज गॉन थ्रू फुल एसीएल, उसका हो गया है. Oh shit, वो दूसरा that is कौन है bad. अपना, उनका उनका डिफेंडर एक और, वो मिलिटाओ, उसको भी एसीएल हो रखा है. One of the, उनके बेस्ट प्लेयर हैं विनिसियस मिलिटाओ और ये. हाँ, हाँ, विनिसियस इज गॉन आउट फॉर 2 मंथ्स नाउ. yeah. Still they're हाँ, playing well, बेंजेमा नहीं है. मतलब यार उसमें भी खामियां तो हैं उनके पास. but they तभी still अच्छा खेल feel रहे the हैं ना. lack of a proper striker. I don't हाँ, think Joselu is a proper outwardly, out and हाँ, out होसेलू striker. He's तो not. नहीं है. मतलब होसेलू ने इस वाले गेम में कितने चांस मिस किए थे? 6 सही बात 7 है, तो गोल हो जाने चाहिए थे जिस हिसाब से उनको चांसेस मिले थे. सही बात कितने है. चांसेस मिस किए मैड्रिड ने इस मैच में. बट आई मीन अगेन, राइट, आई फील लाइक ये एक तरीका होता है चैंपियंस लीग में खेलने का, व्हिच आई थिंक आई एम टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, आई एम हैप्पी दैट दे हैव फाइनली क्वालिफाइड, बिकॉज़ आई थिंक सिंस 2020 2021 दिस इज द फर्स्ट सीजन दैट दे हैव नाउ क्वालिफाइड फॉर नॉकआउट स्टेज. आई वांट टू सी बार्सिलोना इन द नॉकआउट स्टेज. नॉट, आई डोंट वांट टू सी Shakhtar and Andor qualifying for this competition, because मेरे को पता है कि वो कुछ भी, वो मैन सिटी या बार्सिलोना, मैड्रिड कुछ मिल देगी, खोल देंगे उनको 8 क्या फायदा देख के, राइट. कम से कम इसमें ये मजा तो आएगा, कम से कम बार्सिलोना कुछ तो देगी, कंपटीशन तो देगी. भले ओवरऑल चलो मैन सिटी जीत जाए, बट कंपटीशन तो होगा. तो अच्छी बात है, चलो पहुंच गए हैं. इट्स, आई एम हैप्पी फॉर देम. बट यार जस्ट द परफॉर्मेंसेस are not really impressive at all. Like and they have a very important game coming up against Atletico this Sunday. Right. भाई, एंड एटलेटिको, तू एटलेटिको को अगर देखना चाहता है तो भाई एटलेटिको को, मेरे हिसाब से एटलेटिको गेम जीतने वाली. भाई ग्रीजमैन क्या फॉर्म में चल रहा है यार. भाई क्या क्या खेल रहे फॉर्म में हो? चल रहा है. ग्रीजमैन अलग फॉर्म में चल रहा है. I think बहुत he is La खतरनाक Liga's स्टाइल best player right now अभी तक. राइट नाउ. यस, This एग्जैक्टली. season, yes. हाँ, मतलब बेलिंगम और ग्रीजमैन आर वेरी नेक अच्छा एंड हो ना, नेक. वापस चला गया. हाँ, हाँ, वही मतलब बार्सिलोना ने खरीदा हुआ था लोन पे, आई थिंक ना. Yeah. लोन पे खरीदा हुआ था. तो वो सब तो यार वही है, वो सब रबिश साइनिंग्स थी वो सब. तो मतलब बस ये कि नाम के लिए खरीदते जा रहे हो. इट्स लाइक द प्रोजेक्ट दैट पीएसजी वाज बिल्डिंग. बस नाम के प्लेयर्स डालते रहो एंड दे होप कि हाँ, इंडिविजुअल क्वालिटी पे परफॉर्मेंस मिल जाएगी हमको. ऐसा नहीं होता है. कोहेजन Bullshit. चाहिए टीम में, वरना फुटबॉल नहीं चल सकता. तो बट ही एनीवेज, मेरे तो यही थॉट्स थे इस पे, बार्सिलोना पे. बट वेल, वील सी कि क्या क्या खेलते हैं अगेंस्ट एटलेटिको ऑन संडे. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट गेम. आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रूट फॉर एटलेटिको. Right. In that game, I definitely do not like Barcelona for sure. I'm not going to root for that. बट या, थैंक्स यार आने के लिए. और हम लोग संडे को एक और पॉडकास्ट करने वाले हैं. इट्स गोइंग टू बी not our usual Premier League roundup. We're probably trying to do something different. So we're going to talk about Arsenal. We haven't talked about Arsenal in a long time. तो Arsenal के बारे में थोड़ा बात करेंगे. We have a little bit, a lot more topics about Newcastle. और अभी ये जो प्रीमियर लीग का थोड़ा, आई थिंक न्यूज आया था, राइट, कि अबाउट
that they can sign players from their affiliate clubs or something, right? Yeah, yeah. तो उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, I and think then we'll eight, talk about 7, 8 clubs have refuted that yeah, too. Yeah. yeah, and then we'll talk about a little bit about Xabi Alonso also because his team is flying high in Bundesliga and everywhere. Like they just keep winning. आज भी 2-0 जीत गए थे शायद. By तो Leverkusen. Crazy. थोड़ा थोड़ा हाँ थोड़ा बात करेंगे लेवरक्यूसन के बारे में भी. तो स्टे ट्यून. सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, थोड़ा हेल्प हो जाता है. एंड उसके बाद हम सीधा संडे मिलते हैं फिर. गुड नाइट.